हेलो कायनातीस। ये है कायनाती चाय। और आज हमारे साथ मेहमान हैं प्रोफेसर वंदाना सिंह। वो स्पेक्युलेटिव फिक्शन की राइटर हैं, मगर जो उनकी पोजीशन है वो फिजिसिस्ट भी हैं। और वो हैं प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट। वो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी, फ्रेमिंगहैम स्टेट यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स में। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मुझसे दूर नहीं। और मेरे लिए जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आप जो हैं वो एडवाइजरी काउंसिल में भी हैं फॉर मेटी, मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। तो उसके सिलसिले में भी अभी हम बात करेंगे। आपने जो है पोइट्री की किताबें भी लिखी हैं, बच्चों की फिक्शन, और बहुत सारी जो साइंस फिक्शन है, जो स्पेक्युलेटिव फिक्शन कहलाती है, वो भी लिखी हुई है। आपकी किताबें हैं जो मेरे पास जो है, द वुमन हु थॉट शी वाज अ प्लैनेट एंड अदर स्टोरीज, वो मैं आपको दिखाता, मगर वो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। और दूसरी है ये एम्बिग्विटी मशीन्स एंड अदर स्टोरीज। तो ये आपकी मुख्तलिफ किताबें हैं। प्रोफेसर वंदना सिंह, वेलकम। थैंक यू आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप लोग सबके साथ मैं हूँ आज तो बहुत टू बहुत टॉक अबाउट माय फेवरेट थिंग्स साइंस एंड साइंस फिक्शन बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बात हो रही थी कि आपको ये जो साइंस फिक्शन है उसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला हिंदी में बात करने का, तो आज जो है हम उसका जो है वो डेब्यू करेंगे इस हिसाब से। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बात करें, अ, आपका अगर ये पता करें कि आपको शौक कैसे हुआ। अभी आप फिजिक्स में हैं, आप स्पेकुलेटिव फिक्शन में भी हैं, राइटर भी हैं, तो आपको साइंस का और फिजिक्स का शौक कैसे हुआ? ये तो बचपन की बात है। जब हम लोग मेरा पालन पोषण दिल्ली में हुआ था, लेकिन हम लोग पटना जाते थे जहाँ मेरे दादा का घर था। तो बचपन में हम लोग छत पर कभी-कभी सोया करते थे, बच्चे लोग, कज़िन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सब साथ। और जब हम लोग आसमान को देखते थे, क्योंकि उस समय लाइट पॉल्यूशन वगैरह नहीं था। तो आसमान को देखते थे तो जो तारे नज़र आते थे, कभी-कभी मिल्की वे भी बिल्कुल आकाशगंगा बिल्कुल एक दुपट्टा की तरह जो लहराता था आकाश हुँ। में। तो जब वो नज़र आता था, तो मुझे हम लोग बच्चों को लगता था कि शायद तारों से भी अ, कोई हमें देख रहा है, कि हम जैसे तारों को देख रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि ये कहीं और अंतरिक्ष में, कहकशां में, दूसरी दुनियाओं से कोई हमारी तरफ देख रहा हो? तो वो जो वो जो कल्पना, वो जो तसव्वुर की जो क्या कहते हैं, क्या कहें उसे, अवेकनिंग जो होती है, एक तरह का हाँ। अंदर से खिल जाना, तो वो हमारे साथ रहा। बहुत लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बड़े होने पर हम लोग भूल जाते हैं कि बचपन में किस तरह के ख़्याल आते हैं, किस तरह के सोच-विचार आते हैं और वो अद्भुत का जो महसूस करना। तो लेकिन किसी तरह से आई वाज़ वेरी लकी कि मेरे साथ ये सब सोचें, ये ख़यालें सब रह गई हैं। तो जब मैं साइंस फ़िक्शन पढ़ना शुरू की बचपन में ही 10 साल, 11 साल करीब, अ, हिंदी में एक छोटी-छोटी किताबें आती थी, छोटी-मोटी सी किताबें, जिनमें फ़ैंटेसी और साइंस फ़िक्शन का एकदम भरता बना के कहानियाँ होती थी और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। और फिर उसके बाद मैं एसिमोव पढ़ी, क्लार्क पढ़ी और रे ब्रैडबरी पढ़ी, तो उससे भी एक तरह का उत्साह अ, अंदर से आया कि अ, ये जो हमारा जो कहकशां, हमारा जो यूनिवर्स है, our universe is full of wonders, and part of our job as human beings is to be responsive to that wonder. And that's also why, that's the reason why I became a writer, but that's also the reason why I chose a career in science. So एक तरह से दिस इज़ वो होता है ना कि आई मीन वी आर वेरी लकी, क्योंकि अ, एकेडेमिया में या साइंसेज़ में आपको जो बचपन का शौक होता है, मैं मुझे भी शौक शुरू में हुआ था।
और लक की चीज़ ये होती है कि हम बाद में भी बड़े होके भी वही चीज़ कर रहे होते हैं एक लिहाज से। और स्पेकुलेटिव फ़िक्शन पढ़ना भी और लिखना तो ख़ैर और भी ज़बरदस्त बात है। आप उसी को शौक को जो है वो एक्सटेंड करते हैं। आई थिंक ये बड़ी लाइक खुशाइन चीज़ है, खुशकिस्मती की चीज़ है। आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड। तो अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ कि आपकी राइटिंग जो है, वो कैसे हुँ। अभी क्या आपने शुरू में ही लिखनी शुरू कर दी थी स्टोरीज़, पोएम्स या वो बाद में आई आपने कहा कि लेट्स बिल्ड ऑन दैट वो कैसे फिज़िक्स और फ़िक्शन जो है वो कैसे साथ-साथ चली? अच्छा। अ, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अम, मैं बचपन से ही लिखना शुरू की थी। जैसे मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई थी। घर में तो लोग हिंदी बोलते थे, खिचड़ी भाषा बोलते थे। और लेकिन तो मैं पहले इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश की और थोड़ा बहुत अपने लिए लिखती थी बचपन में ही। अ, भाई-बहन को, पेरेंट्स को सुनाती थी बस और कुछ नहीं। और ऐसा हुआ कि अ, जब मैं यूएस में आई ग्रेजुएट स्कूल में फिज़िक्स की पीएचडी के लिए आई, तो उस समय मुझे बहुत वो जो एक्सपीरियंस था वो उस तरह का मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि मैं कोई एलियन की तरह कोई दूसरे प्लैनेट पर आ रही हूँ, उस तरह का लगा हुँ, मुझे। अ, और कोई लिटरेचर में कोई उस तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं था नॉर्मल लिटरेचर में। तो मुझे लगा कि साइंस फ़िक्शन जो मैं पढ़ा करती थी सालों पहले, उसी में उस तरह का अनुभव, उस तरह की फीलिंग्स इवोक होते हैं। तो मैं फिर से साइंस फ़िक्शन पढ़ने लगी और पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना भी चाहिए क्योंकि जो साइंस फ़िक्शन मैं उस समय तक पढ़ी थी, वो मोस्टली वेस्टर्न राइटर्स एंड दैट टू मोस्टली मेल राइटर्स लिख रहे थे अपने अपने दृष्टिकोण से। तो मुझे लगा कि मेरी जो कहानी है या मेरे तरह जो लोग हैं, जो साउथ एशिया के लोग हैं, हुँ। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो क्यों नहीं लोग लिख रहे हैं? उसके बारे में क्यों नहीं विचार है? तो मैं इसलिए वो सब लिखना शुरू कर ली साइंस फ़िक्शन की स्टोरीज़। वैसे मैं जब 10 साल की थी, तो मैंने कोशिश की थी एक साइंस फ़िक्शन स्टोरी लिखने के लिए और वो थैंकफुली इट्स लॉस्ट टू द डस्टबिन्स ऑफ हिस्ट्री। But that was my one attempt in the early years. फिर मैंने the second time I tried was late 1990s को एंड उस समय मेरा जॉब भी छूट गया था और मेरे एकेडमिक्स में आई वाज आउट ऑफ एकेडमिक्स फॉर 10 इयर्स। तो आई वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की ज़रूरत थी। तो इसलिए आई दैट वाज वन ऑफ द अदर रीजंस आई टर्न्ड टू साइंस फिक्शन टू ट्राई टू राइट इट। सो दैट्स हाउ इट केम अबाउट। नहीं, नहीं, वो आर्काइवल उसके लिए जो है, वो आपकी जो 10 साल वाली कहानी थी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसको डिग अप करना पड़ेगा, कहाँ है वो? लेकि वो तो थैंकफुली I don't think it can be found anywhere. Probably the papers have been given to the kabadiwala like 40 years ago. वो So जो yeah. आई डोंट नो इफ यू आर familiar with दास्तान-ए अमीर हमज़ा हाँ, हाँ, लाइक हाँ। तो दे वर जो मुझे पता है एंड आई ग्रू अप ऑन दोज़ लाइक वो आई मीन दैट हैज़ फैंटेसी हुँ, एलिमेंट क्वाइट अ बिट या, या। उसका जो बच्चों का वर्ज़न था मकबूल जहांगीर एक थे उन्होंने वो लिखा था बच्चों का वर्ज़न उसकी 10 पार्ट्स थे अच्छा। और एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रीडिंग क्योंकि वो जो 10 ओह! पार्ट्स थे एब्सोल्युटली लव देम और मैंने वो कम से कम आई थिंक आई रेड देम 20 टाइम्स एट लीस्ट और मैं जब मैं अमेरिका आया आई केम हियर अबाउट 30 इयर्स अगो वो मैं अपने साथ हुँ, लेके आया था वो मेरे पास यहाँ पर अभी मेरे पास हैं वो उर्दू वाली जो है वो अच्छा। लेकिन व्हाट आई रिमेंबर इज के सो वो कमीशन की थी अकबर ने अपने कोर्ट के लिए और उसने वो तस्वीरें बनवाई थी क्योंकि वो खुद तो पढ़ता नहीं था लेकिन तो उसने वो जो है वो पेंटिंग्स जो हैं वो बनवाई हुँ, थी हुँ। सीन्स की और वो मिली लोगों को कश्मीर में लोग जो है वो खिड़कियां जब टूट जाती हैं तो वो पेपर कवर करते हैं सो ओहो! somebody हाँ, हाँ। एक्चुअली फाउंड दीज ओरिजिनल्स जो कि वो वाओ!
खिड़की के जो वो होते हैं वो उन्होंने किया, और उसके पास फिर ये जो मेट्रोपॉलिटन आर्ट है न्यूयॉर्क में, देयर वाज़ एन हुँ। एग्ज़िबिशन उसके ऊपर। ओह वाओ! तो वो जो कबाड़ी वाले वो है, हू नोज़ कि वो काम आ ओह! जाती है बहुत कभी-कभार। मगर ये you have फ़ैसिनेटिंग a हो जाता point. है। Yeah. अ, And actually I have that volume on my shelves. मुझे मालूम नहीं था कि इनमें इसकी बच्चों की भी वर्ज़न है. That's wonderful. राइट। हमें मुझे तो इस वक़्त के शुरू में उसी का पता था, एंड आई हुँ, एब्सोल्यूटली लव दैम। मैंने अभी तक वो मैंने कोशिश की थी, मेरा बेटा अभी 10 साल का है, सो लाइक ट्राइड टू रीड हिम। वो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, लाइक फिर उसकी भी बात है, ऐज की कम, वो लफ्ज़ कौन से यूज़ हो रहे हैं, दिस एंड दैट वन। हुँ, 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 मगर कैन आई, तो अगर मैं उसी डायरेक्शन में जिसमें अभी आपने बात की, अ, आपकी एक किताब के आखिर में, ये आपने अलग से भी लिखा हुआ है, आपका एक है स्पेक्युलेटिव मैनिफेस्टो। आपने हुँ, एक ऐसे लिखा है इस सिलसिले में, और वो फैंटेसी और साइंस फिक्शन के सिलसिले में है कि हाउ यू थिंक अबाउट इट। और अभी आपने ज़िक्र किया, व्हिच इज़ fascinating, कि जब आप यहाँ पर आईं, आपको पहली बात तो ये है कि बिल्कुल एलियन सी एनवायरनमेंट है, और अ, फिर उस किस्म की आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। अ अ, मेरा भी पैरेलल है थोड़ा-सा, हिसाब से मैं अंडरग्रेड में आया था, और अगर आपको मैं एक रिकमेंड करूँ, आई डोंट नो अभी आपने देखी कि नहीं देखी, एक कोरियन फ़िल्म अभी आई है, पास्ट लाइव्स के नाम से। अगर आपने नहीं ओह! देखी तो आप वो, अभी वो सिनेमा में थी, अभी वो स्ट्रीम होगी। वो थोड़ी-सी अच्छा, इस एक्सपीरियंस से वो डील करती है, मगर फिक्शन, वो खाली फिक्शन है, इट्स नॉट एक्चुअली बेस्ड ऑन रियल लाइफ, मगर नॉट ओह! साइंस फिक्शन। हाँ, अ, हाँ, तो स्पेक्युलेटिव मैनिफेस्टो में आपने कुछ चीज़ें कहीं, और उसमें आपने, जो मैं 2 चीज़ों को पिक करूँगा, उसमें आपने कहा कि इसका जो पोटेंशियल है, वो बेइंतहा है। लाइक यू कैन रियली, और आपने ये भी कहा कि वो अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ सही तरह से, लाइक कि हुँ, उसका जो हुँ, पोटेंशियल। तो आप किस चीज़ की बात कर रही हैं? आप थोड़ा-सा इसको क्लैरिफ़ाई कर सकती हैं? हुँ। कोशिश करूँगी असल में मैं इसके बारे में बात करती हूँ यूजुअली इंग्लिश में तो आई माइट हैव टू स्विच टू इंग्लिश बिल्कुल, बट बिल्कुल। वन डे आई वांट टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी फॉर एवरीवन बट बेसिकली द आइडिया इज कि यू नो वी लिव इन सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स है ना जैसे अब हमारा कल्चर हो या इकोनॉमिक सिस्टम हो which you can call a framework or a paradigm. So we can think of it as invisible structures जिसमें से हमारे concepts निकलते हैं, जिसमें से हमारे values निकलते हैं. अ, जैसे एक कल्चर अमेरिकन कल्चर मेन स्ट्रीम कल्चर और साउथ एशियन कल्चर में जो डिफरेंसेस हैं those come about you don't take it you take some things for granted जैसे कि साउथ एशियन कल्चर्स में the way guests are treated is different than how the more casual way that people in the west do but you don't think about it when you're immersed in your culture but up when you travel to that other planet or the other world then suddenly you realize ki, Arey, there are other ways to live and be not just my own um, so that's what I mean by a framework, a paradigm, or whatever you want to call it, which helps us invisibly make sense of the world. And most of the time, we are not aware that we are making assumptions about the world. So, and similarly with economics, we think that abhi jo neoliberal, globalized economic system hai, that's the way to be. या डेवलपमेंट को लीजिए तो डेवलपमेंट का एक ही पाथ है जो वेस्ट ने हमें दिखाया है एंड ऑल द रेस्ट ऑफ अस हैव टू जस्ट कैच अप विद दैट राइट सो दीज आर ऑल एक तरह के you can think of it as a jal in which we are trapped these are invisible and mental shackles in a way so one of the things that speculative fiction does and does very well is that it can immerse us in worlds where the fundamental rules of whether they are sociological or scientific or technological are completely different. So suddenly you realize that the things you take for granted are not set in stone. They are actually constructs. And that means you can deconstruct them, you can change things. So that's what I mean by the revolutionary potential of science fiction, of speculative fiction. Am I making sense? I hope I'm हाँ, making नहीं, sense. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Uh, और और आपने कहा लेकिन कि
वो जो है मगर आई गेस आपने जिस चीज़ का ज़िक्र किया था पहले कि उसमें जो वॉइसेज़ हैं या जो उसमें लोग लिखने वाले हैं, हुँ। ज़्यादातर वो हालाँकि वो उसको ब्रेक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रेक्स हैं, वो फिर भी वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर ब्रेक्स हैं। हाँ, हाँ। मगर समबडी फ्रॉम ग्लोबल साउथ की जिस तरह से अगर हम बात करें, तो दैट वुड बी अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ ब्रेकिंग समथिंग, राइट? आई मीन नॉट जस्ट Yeah. प्रोवाइडिंग अ पर्सपेक्टिव। Exactly. Yeah, yeah. And also we have to recognize, of course, that our societies are also very unequal, and there are power hierarchies in our societies as well. So, at one level, if you look on the global scale, so there's Western speculative fiction, then there's, let's say, fiction from the global South. लेकिन अगर उसका जांच हम लोग थोड़ी बारीकी से करें, तब ये भी स्पष्ट होता है, पता चलता है कि हमारे ग्लोबल साउथ में भी जो इनइक्वालिटीज़ हैं, अ, उससे भी हमें उसको भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। So in India, for example, Dalit writers, Adivasi writers, their voices, their ways of seeing the world become extremely important. So, we can't just talk about that large scale. We have to examine ourselves as writers and see ki, where is our positionality in this, pyramid of privilege? And then how do we hear and how do we signal boost those voices in our own context as well, and the kinds of amazing ways of rethinking the world that come, so for instance, I've been looking at indigenous value systems, partly because I'm also a scholar of climate change, and it's just a completely different orientation. So that's partly what I mean by the value of speculative fiction, because if you immerse yourself in a world which is so different that even the fundamental things you take for granted are changed, then you start to question your own assumptions, and it's unrealized. This potential is unrealized because we we have not yet come to that point where now it's actually very exciting time for speculative fiction. तो आजकल ये ऑनलाइन स्पेकुलेटिव फिक्शन कॉन्फ्रेंसेस एक है फ्यूचर फिक्शन जो एक्चुअली फ्रांचेस्को वर्सो who's this amazing writer editor from Italy. He has been actually organizing, and with the help of international group of people, these truly international science fiction conferences, and you hear voices from different countries in Latin America and Asia, including South Asia and so on. And it's so interesting to hear all these different perspectives. So that unrealized potential, I think we are living in a very exciting time as the world is hurtling towards disaster, which it is. I mean, we are already in a lot of trouble because of not just because of climate change, but all the related social environmental problems. You know, it's people, more and more people are questioning this dominant way of living and thinking that's been globalized. And um, and so Uh-oh. speculative fiction has an even more important role. सो इट्स इंटरेस्टिंग कि आपने जो भी ज़िक्र किया कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आ रहा है, एंड यू आल्सो सेड कि हमारी जो क्लाइमेट है, वो एक डायरेक्शन में जा रही है जो कि इस साल तो ख़ास तौर से आई मीन हम लोग जो फायर्स हैं और Hmm. मुख्तलिफ चीज़ें हैं, Hmm. सैलाब हैं, ड्राउट हैं, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ऑल एट द सेम टाइम। आई मीन ये वो लीडिंग क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेकुलेटिव फिक्शन का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका रोल है। मगर आई वुड आस्क अ स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन कि डू यू थिंक कि इट कैन मेक एन इम्पैक्ट, राइट? या उसके लिए हमें व्हाट स्ट्रेटजी कैन मेक इट मोर इफेक्टिव? क्योंकि यस, Hmm. स्पेकुलेटिव फिक्शन कैन बी इम्पोर्टेंट, यस, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट इट कि वो जो इस किस्म की चीज़ें हैं, मगर व्हाट डू यू थिंक कि इट बिकम्स एन इफेक्टिव टूल? क्योंकि वी रियली हमें जो है नैरेटिव चेंज करना है, क्योंकि वी आर इन सीरियस ट्रबल। Yeah. Yeah, no, we are in serious trouble. And, speculative fiction by itself can't do anything. But I think that speculative fiction can play a role in this sort of
multi-pronged, uh, connected, networked way of engaging with the problem. Right. Because, like you said, we need different narratives. We need different, like thought experiments. And Right. speculative fiction can really help us make those thought experiments. Like I wrote a story a long time ago called Indra's Web, which is about a, a settlement. It's in that Ambiguity Yeah. Machines Yeah. collection. And it's about a different way to imagine a city. Um, and, in that sense, reimagining the world in which we want to live, and one in which is not just helping us renegotiate our relationship with the rest of nature, but also a world that's more just, more equal, more peaceful. There's a great joy in doing that. And so, for the duration of writing the story or reading the story, you're actually in that world. Right. And that shifts you from the inside. But of course, it's not enough. Right. So, one has to, and I'm not an expert in this, but I know people have talked about how certain kinds of literature influence movements, Right. or inspire movements and thought processes and so on and so forth. So I can speculate that speculative fiction uh, can perhaps inspire or be part of some kind of large scale movement that's reimagining the world. And in that sense, I can see the possibilities. In fact, I do an exercise with my students to help them shift their way of thinking about the world. Like, what can the future look like? Or, and we talk about colonialism, which of course South Asia is experienced in for all First those hand. years of British rule. But also, most of the world for 300 to 500 years was under European colonialism. Right. So a lot of our ideas, and we are not actually, I don't think we're in a post-colonial world. The Right. colonialism is just shape-shifted. In fact, Right. some scholars think it's colonialism by corporation. Right. But anyway, that aside, uh, the the fact is that our ideas, our thoughts, our concepts, so many of them come from the legacy of colonialism. And so, if we think about, if we imagine different worlds and try to live different worlds, not in isolation, because we don't have time for individual, impact to scale up, but through movements and collectives, then I think that speculative fiction can play an important role. Um, and it's और a hard task, but it's या possible, I think. एंड और अगेन अभी आपने जो बात की तो कायनात का जो है इंग्लिश चैनल भी है एंड ओवर देयर वहाँ पे एक सीरीज है चाय ऑन द मून सो आपको मैं उसके सिलसिले में भी बॉदर करूँगा कुछ महीनों में क्योंकि व्हाट आई वरी Hmm. अबाउट आपने भी जिस चीज़ की बात की इकोनॉमिकली के वो जो स्ट्रक्चर्स हैं कॉरपोरेशंस के एंड थिंग्स लाइक दैट अब वो Hmm. another form of colonialism and that is going on और वो अब स्पेस में भी like you know it's being sort of like exported into space और फिर वहाँ से वो उसी चीज़ को हम replicate करेंगे with same problems I mean तो वो चीज़ है तो मैं उसके सिलसिले में आपसे Yeah. मैं और लंबी बात करूँगा separately क्योंकि I mean that's a fascinating and depressing topic at the same time मगर Yeah. मगर मैं यहाँ पे मैं if I can क्योंकि I want to keep sort of like you know आपके मुझे टाइम का भी आपको पता है आप मुझे पता है आपका वैल्यूएबल है अगर मैं आपकी एक दो स्टोरीज का the ones that struck me एक तो आपकी Hmm. जो कहानी थी which I absolutely loved वो जो है the woman who thought she was a planet right Hmm. and it uh, जो कि एक लिहाज से आई मीन आप अभी मुख्तलिफ कंट्रीज की बात कर रही थी मगर ऑफ कोर्स जेंडर एंड साइंस आप जो हैं वो साइंसेस में हैं फिजिक्स में हैं एंड जेंडर इश्यूज सॉर्ट ऑफ लाइक स्टेम फील्ड्स में तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि लाइक यू नो कि व्हाट इज दैट स्टोरी अबाउट और उसकी मोटिवेशन कैसे थी एंड हाउ डिड यू इमेजिन दैट क्योंकि आई थिंक इट्स जस्ट अ फैसिनेटिंग स्टोरी लाइक यू नो द वे यू इमेजिन्ड इट ब्रिलियंट Well, thank you. Um, that story is a very strange one. क्योंकि most of the time जब मैं लिखती हूँ तो मैं फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करती हूँ
और मुझे मालूम उस समय नहीं होता है कि उसके बाद क्या आने वाला है। हाँ। तो उसके बाद क्या आने वाला है, उसको पता करने के लिए मुझे सेकंड सेंटेंस लिखने की ज़रूरत पड़ती है। और सेंटेंस लिखते-लिखते फिर कहानी की ओर, जैसे जंगल में कहीं रास्ता मिला उस तरह से कहानी की ओर वो शब्द ले जाते हैं हमें। अ, लेकिन ये जो कहानी है, वो एक दिन मैं सुबह में उठी और मुझे लगा कि अरे! मेरे मेरे सर में कोई बोल रहा है, कुछ अपनी कहानी बताना चाहता है। एंड आई स्वेयर टू यू, आई जस्ट सैट डाउन एंड टाइप्ड आउट द होल स्टोरी in one go. It just came to me complete. Normally, like I said, वो I start with a sentence. कभी-कभी मतलब I have a vague idea कि हाँ middle में ये scene होना चाहिए या perhaps end में should have this word or that phrase. Oh, लेकिन वो Vandana, one second, बहुत vague Vandana. होता है. Uh, हाँ, sure, you sure. have to go back again. It got stuck. Again, you were saying normally it comes down. That's where you were saying, and then you froze. Okay, sorry about that. Yeah, no, no, that's okay. That's Yeah, okay. what Yeah. I So you was did say you did it all in one go, right? yeah. Yeah. So, did you not? I think what you didn't catch perhaps was when I was talking about what I do normally, right? Yeah. No, I So I think yeah, can. yeah, yeah. That's right. Yeah, I think we got that. Just the last few Okay. seconds of it. I think you were saying and then you started writing it, and you wrote it in one go, और उसके बाद आगे. Yeah. Yeah, yeah. I wrote it in one go, and what I was saying was that when I normally write a story, then like I said, I have a first sentence and so on, and I may have a vague idea कि middle में कुछ होने वाला है या last scene में क्या होना चाहिए, that sort of thing. But I don't have the complete story, and I have to write it to find out. For this particular story, I don't know why. It does not happen normally, but it just came to me complete. And the second round of editing was very minor, so it was very strange experience. क्यों? आई मीन आई मीन किस वजह से? आई मीन क्योंकि ये जो स्टोरी है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं रमनाथ मिश्रा uh, और उसकी जो बेगम है कमाला, uh, राइट? इज दैट राइट? कमला और कमाला? kamla आप किस तरह kamla से? kamla कमला, yeah. राइट? तो uh, किस वजह से? आई मीन व्हाई डू यू थिंक कि वो जो स्टोरी है दैट रेजोनेटेड विद यू, या उसका जो प्रोसेस है दैट वाज डिफरेंट? um, I don't know. It's one of the mysteries of the unconscious mind. कि जो पहले के जो experiences हैं, images जो हैं, suddenly they crystallize into a story, into a narrative. And I have not had any direct experiences like that story, but of course, we've all observed patriarchy, for instance. राइट, And especially वो earlier generation में जिस तरह के relationships थे between the genders, and which are still true in many contexts. So I've observed those sort of things, and so somehow, and again, I did not. It's 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 I, I find it extremely hard to explain how that story got written, uh, because I don't know myself. It's one of the mysteries of writing. मेरे लिए एक And और you know how फैसिनेटिंग they चीज़ इस लिहाज say, से and I कि don't like to say this व्हेन for यू राइट myself because साइंस it पेपर्स, sounds too boastful उसमें or खासतौर too से पेपर्स जो mysterious. होते हैं इसमें एक्चुअली यू एग्जैक्टली नो कि उसमें कहाँ पर वेयर द स्टोरी इज गोइंग. मगर इट्स रियली Mm. इंटरेस्टिंग कि for your fiction writing, it's exactly the opposite. कि when you're writing one sentence, आपको ये नहीं पता कि story कहाँ जाएगी. So in some sense, it's a really beautiful contrast के science papers में you exactly know. In fact, you tell them, abstract में बता देते हैं कि this is what's going to happen, and then you lay out कि how is it going to happen. Whereas fiction, it's different. So that's actually really interesting to me as well. Well, in theoretical physics, things are not so clear cut. So, which is my background is in theoretical physics, because the universe becomes even stranger the more you try to understand it. Right, So, there's no cut and dried reality in that sense. Um, but yeah, but that's a whole other story. right. So, अच्छा, एक और स्टोरी which caught my eye, और उसके बाद then we will wrap it up. hmm. वो
लाइक एक खास तौर से कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई वाज इंट्रीग्ड बाय आपकी इन्फिनिटीज, और उसमें जो है जो हुँ, कैरेक्टर हैं अब्दुल करीम का, आई मीन इट्स सीप्ड इन, एक लिहाज से इफ आई रिमेंबर करेक्टली उसमें उर्दू का काफ़ी, उर्दू लिटरेचर, और लिटरेचर उसमें उसका जिक्र है, इन्फिनिटीज का जिक्र है। आई एम जस्ट क्यूरियस, उस स्टोरी की जेनेसिस, या उस स्टोरी का, इसमें हुँ, पॉलिटिकल कमेंट्री भी है, अगेन इट्स अ फैंटेसी, सो देयर इज एन एलिमेंट, आई शुडंट से, no, it's not time travel, मगर it's sort of like dimensional हुँ, aspects हुँ, उसमें फैंटेसी के राइट, आते हैं। राइट। तो उसकी क्या, I mean, I'm just curious, क्योंकि that had, again, that resonated quite well with me, लेकिन मगर I was just curious. Yeah, well, there's among the things that I've always been concerned about is, uh, and especially now, but even at that time, how easy it is for politicians to divide communities, like, Muslims and Hindus, or between castes in India. And I grew up with grandparents who had taken part. My grandmother on my father's side had taken part in the independence struggle and so on. And my grandfather had, during partition, actually helped to prevent riots along with a Muslim friend of his. Mm, mm, So I was brought up in this very open hearted, open minded atmosphere. So whenever there used to be any kind of communal disharmony, it used to really, and still does, right, really, really hurt me inside. So it was partly because I wanted to put that in fiction, and I had not done that before. It was in my mind that I needed to write about those things. But it also has struck me since childhood, especially because the universe is just so amazing and so full of wonder, that why do we waste our time fighting with each other, mm, mm, when we have a common origin from the stars, and we are all inhabitants of Mother Earth. And so, is it possible that if people were exposed to how wonderful the universe is, would they be able to, would that change our relationships among communities? And of course, you can say that's very naive. But anyway, what happened with that story was that Abdul Karim walked into my mind, and I didn't mm, know him at first. He was just this old, beaten down man, very different from myself, different religion, different age, different generation, all of that. And small town, I grew up in a big city. So, and he walks into my mind and he just stays there for a while. And then I learn that he's very interested in mathematics, that his whole life has been devoted to other needs of his family and so on, but his passion is mathematics. And so then there were some vague images, like he's playing chess with a friend, and then somehow this notion of mathematics coming back to him in old age. And and then, at the same time, there's all these Hindu Muslim tensions and so on and so forth as a kind of backdrop, which he hardly notices when he's on his journey, because it's like, it's so amazing, the universe is so amazing, and we humans are so fortunate to live in it, that it just seems entirely alien to him, right? And uh, so I started to write about him. And I had, other than those vague images of possibilities, I had no idea what was going to happen in the story. mm, And so सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखते लिखते तब मुझे पता चला कि अच्छा, अब ये होने वाला है, अच्छा अब ये हुआ, तब इसके बाद Abdul Karim क्या करेंगे अब? mm, So, it was such a strange, and it was so difficult to write. It's one of the most painful mm, things to write that I've ever written. But I was, under say, there was that compulsion that I have to write mm, this down. And it was also joyful to write. So uh, and I asked myself, what right do I have to make elderly Muslim gentleman the main character of the story? And I did a lot of research. It was on mathematics, on religion, and so on and so forth. And the
historian Salim Kidwai was very kind and looked at the story, and so did Danish Hussain. I was so grateful to both of them. Of course, any faults in the story are my fault, not their fault. But but it was, and then I consulted. I talked to friends who are mathematicians, did a lot of reading on ancient mathematics as well as the mathematics of infinity. And it was a real adventure writing that story. But yeah, I'm very fond of Abdul Karim. He's one of my favorite fictional characters, and he lived for a long time in my head before I wrote the story. नहीं, it popped out for me also. I mean, like, no, मैं reading, इसीलिए मैं पता कर रहा था क्योंकि it's such a rich character, and it's such a richly visualized character, like, a realized character. Okay, I really appreciated it. So fascinating to know the story behind it. uh acha, so I'm gonna wrap things up, and I know कि आप जो हैं वो, as I mentioned, advisory council में भी हैं for messaging extraterrestrials. But I wanted to go the other way. uh, or, like, कि in your mind, if we do detect a signal, of course, क्योंकि SETI उसके भी चल रहा है, and not sort of like we actually see people or something like that, or aliens, but if we just detect a signal, uh, how do you see कि हमारी सोसाइटी जो है या जमीन जो है, लोग जो हैं, just as a guess, sort of like, how would they change, sort of like, over 100-year, 150-year time frame? Again, for me, wo jo Arthur C Clarke ki kitab thi, The Childhood's End, I mean, in some sense that is, I mean, I love that because उसमें जो है वो जल्दी नहीं है, वो हॉलीवुड की तरह से नहीं है, मगर like, it goes like, अच्छा चलो अगर 50 साल 100 साल का स्केल जो है वो, how do you see कि अगर हमारा वाकई हमें खाली सिग्नल मिलता है, which is we know कि वो alien intelligence है, and that's all we know. Do you think कि हम वापस अपने go back to what we are doing, or do you think कि there would be some structural change, or do you think कि कुछ impact होगा? I think there will be. There's got to be some impact. I mean, I think a lot of things will stay the same as long as it's just a signal. But and we're going to see different kinds of reactions from different sets of people. So if you compare ET with some of the Bollywood blockbusters, like where the aliens come to land and then they all take part in a dance number, right? It's very different from the Western conceptualization. Uh, So I think that we are going to have people who are in power, for instance, will be interested in, oh, what kind of new technologies of control can we learn mm, from an advanced civilization, right? Others will be interested in, well, now that we know that there are people on other worlds, what does that mean for us humans? That means that there is such a thing as a common humanity, because there is the other. And so some people will be thinking along those lines. And what it's going to end up being depends on a lot of factors, of course. Whether the aliens actually do more than just send messages, maybe do they come to visit, or also the other internal issues that are taking place in within human societies on Earth. So yeah, but that's a very, very interesting question. mm. चलें, ठीक है, आपसे फिर से कांटेक्ट रहेगा, एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत जरूर बहुत शुक्रिया जरूर आपका टाइम के सिलसिले में, और एंड फॉर दिस वेरी रिच कॉन्वर्सेशन. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. आई रियली एंजॉयड इट एंड वील कीप इन टच.